चलो, ready all of you? Page number 104. Prem, I cannot see your face, beta. Prem. Okay. So we were towards the end of the chapter. We learned that how India got its shape, its location, and its structure. We learned about the geological structure, right? And accordingly, we learned that the whole of the earth, first of all, initially it was divided into two plates, the Gondwana plate and the, yes, and the Eurasian plate. Out of that, India was the part of Gondwana land. Okay, then this Gondwana land and Eurasian plates further disintegrated. There was divergence and there were cracks, and finally, they both these plates finally divided into seven different plates. And these seven plates are the seven current continents on the globe. अब प्लेट्स के नाम कैसे याद रखने वो मैंने आपको ऑलरेडी कल सिखा दिया था. Okay, and because of this divergence process, I taught you two processes, divergence and convergence. What happens in convergence? Yes, when the two plates come nearer, it results into convergence or folding. And when the process of divergence occurs, the two plates go far away from each other, which is also known as faulting. Okay, and because of this process itself, there was the Tethys Sea in the north of India, which submerged, and the Himalayan mountains emerged because of this tectonic forces. Up to this, we had already done yesterday. Any doubts? Anybody? Okay, let's continue. Page 104, second paragraph. Keep a pencil in your hand. A large valley was formed to the south of Himalayan system wherein alluvial sediments were deposited by the rivers flowing from north and south of it. Now you know that whenever rivers flow, they bring lot of minerals along with it. सबने रिवर्स देखा ही होगा शायद, देखा है कि नहीं? तो रिवर्स जब फ्लो होती है तो उसके साथ बहुत सारा मटेरियल आता है. कभी कभी प्लास्टिक की बॉटल्स भी आती है, कभी कभी वेफर के रैपर्स भी आते हैं, किसी का टूटा हुआ चप्पल भी आता है, देखा है ना, राइट? तो सिमिलरली when the rivers come from mountains, mountains से जब river flow होती है तो it brings lots of sediments here, rocks, soil, sand and other minerals. Okay, these are known as sediments deposited by the rivers and these makes the land fertile. जब माउंटेन से रिवर आती है ये सभी सेडिमेंट्स लेकर और जब वो लैंड पर फ्लो होती है तो वो लैंड को बहुत ही फर्टाइल बनाती है. Okay, thus the Ganga plain between Himalayas and the southern peninsula was formed. This is how Ganga river was formed. A huge volcanic eruption took place in the northwest of the peninsular plateau, as a result of which the western portion of the plateau was disintegrated and was submerged. This led to the formation of Arabian Sea. Now we are going to the northwest. Rudra, just wait for a minute, okay, beta? Now, north we already know. यहाँ पर जो तेथीज सी था इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, सपोज इफ दिस इज इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर दिस वॉज डिसइंटीग्रेटेड एंड द हिमालयस केम इन टू एग्जिस्टेंस. सिमिलरली दिस पोर्शन, यहाँ पर एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ एंड दैट रिजल्टेड इनटू सो मेनी प्लेटूज एंड this plateau started submerging in the nearby water body and this water body then came to be known as the Arabian Sea. समझ में आ रहा है सबको? ड्यू टू दिस सबमर्जेंस, सबमर्ज मतलब डूबना, सिंक होना, ड्यू टू दिस सबमर्जेंस द वेस्टर्न घाट्स बिकेम मोर डिस्टिंक्ट. ये एक्चुअली पहले क्या था कि दिस होल एरिया वाज फ्लैट, ये पूरा फ्लैट था, लेकिन डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर वाटर आ गया और यहाँ पर लैंड थोड़ी ऊपर आ गई. तो बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर वाटर आ गया तो ये बड़ा सा लैंडफॉर्म ज्यादा दिखने लगा, इट बिकेम मोर डिस्टिंक्ट.
Okay, and that is why this particular place is named as Western Ghats. और यहाँ पर है Eastern Ghats, a group of plateaus. Am I very clear? All of you समझ में आ रहा है? Okay, Rudra, what was your doubt, beta? Thus, a large diversity is seen in the Indian subcontinent. There is lot of diversity seen. I cannot see Sushant and Neil. Lofty mountain ranges. What do you mean by lofty? We have already written the meaning. High. अगर नहीं पर याद है तो वापस से लिख लो. Lofty means high mountains. So lofty mountain ranges are seen in the north. Many plateaus, summits and passes are seen within them. नॉर्थ में देर आर सो मेनी माउंटेन्स. अब माउंटेन्स में अंदर क्या क्या है? सपोज इफ यू हैव सीन अ माउंटेन, एक्चुअली सबने देखा है माउंटेन, राइट? दीज आर लॉफ्टी माउंटेन्स. उसमें क्या है? देर आर प्लेटूज, बीच बीच में प्लेटूज भी है. आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज अ प्लेटू. समिट्स, समिट मतलब पीक. अंडरलाइन द वर्ड समिट. ये जो है ये पोर्शन, ऊपर का पोर्शन, that is known as a peak. So underline the word summits and write the meaning peaks. And passes are seen. Now what is a pass? This also we discussed previously. What is a pass? Anybody? Pass नहीं पता? At least yes or no तो बोलो बेटा. Okay. Now whenever there are big mountains, जब बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं तो उसमें नेचुरली पाथ होते हैं जिससे आप माउंटेन के उस तरफ जा सको, लाइक दिस. ओके, तो ये नेचुरली मेड नैरो पाथ are known as passes, and these passes are generally in the mountains or hills only. समझ में आ रहा है? What are passes? Yes, तो अभी अंडरलाइन कर लो क्योंकि याद नहीं रहता तो हम मीनिंग लिख लेंगे. पासेस में लिखो नैरो paths within mountains. Narrow paths within mountains. Okay, so many plateaus, summits and passes are seen within them. Ganga, Yamuna and Brahmaputra rivers flow in the northern plains. Their alluvial deposits have formed these plains. Now you know what is an alluvial deposit. Okay, the river flows over here and this is the land area. तो रिवर्स जो है वो बॉटम में से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर लैंड में लेकर आती है. एंड ड्यू टू दिस द लैंड बिकम्स वेरी फर्टाइल. This is known as the alluvial deposits. Two edges in the form of ghats on two sides of the plateau and coastal plains on eastern and western margins are situated. Two edges. अभी देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है? तो यहाँ पर भी प्लेटू है. प्लेटूस पता है ना सबको किसको बोलते हैं? So two edges in the form of ghats. Edges मतलब corners. ये दोनों तरफ घाट्स है. On two sides of the plateau and coastal plain. यहाँ पर भी कोस्टल एरिया है, अरेबियन सी. यहाँ पर भी कोस्टल एरिया है, बे ऑफ बंगाल. ठीक है? दे फॉर्म द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन. अभी मार्जिन आपको पता है ना, अगर ये आपका बुक का पेज है तो यहाँ पर एक मार्जिन होती है, यहाँ पर एक मार्जिन होती है. तो दीज आर द मार्जिन फॉर्म्ड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ अवर इंडिया. समझ में आ रहा है ना? Thus, India holds a diversified physiography. Diversified means having lot of varieties. इंडिया में बहुत सारी फिजियोग्राफी है. माउंटेन्स भी है, प्लेटूज भी है, प्लेन्स भी है, फॉरेस्ट भी है, डेजर्ट भी है और वैलीज भी है. So these are the varieties of physiography found in India. Here we end the chapter. If anybody has any doubts, you can ask me.
Any doubts? Shall we directly start with the exercise? Yes, beta. Okay, so this will be our answer 1.1. Okay, India has a strategic location. Explain. Strategic meaning important. इंडिया का जो लोकेशन है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ ऑफ एशिया में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Why is it important? That is the question. The answer is on page 101. See the paragraph below the map. India holds a strategic location. 1.1, page 101. The paragraph below the map. Did you find it, all of you? Okay. Start from the first line. India holds a strategic location in Eastern Hemisphere and it has a strategic importance also. India is in the Eastern Hemisphere. Oceans have contributed immensely in developing mutual relations in ancient times. India had trade relations with East Africa, West Asia, Southeast Asia, and Southeast Asia since ancient times. India has developed cultural and commercial relations with them due to her location. No country in Indian Ocean has a long maritime boundary as India has. Up to as India has. That's a 1.1 complete. Any doubts? Okay, now comes your 1.2. Now 1.2 का question क्या है वो आप मुझे बताओ. Read the question. Okay, now I am reading, just check it. Why is the physiography of India diversified? Explain. Is it the question? Okay, fine. The answer is on page 104. Last paragraph, first line. A large diversity. A कर दो capital. 1.2, page 104, last paragraph, a large diversity. Did you all find it? Okay, start from there. A large diversity is seen in the Indian subcontinent up to the end of the paragraph. Diversified physiography. That's your 1.2 complete. Any doubts? Okay. Number 3. Why has the international trade of India become easy? India internationally trade करती है because we have water on all the three sides, right? Page 101. See the second paragraph below picture. जहां पर हमने 1 point मार्क किया ना उसके नीचे का पैराग्राफ. 1.3, page 101. Second last paragraph. Location of India across. Can you find that? That full paragraph makes your 1.3. Starting from location of India across up to Pacific Ocean. Any doubts? Okay. Number 4. India has become a place of cultural confluence. Explain. Confluence means combination. There are so many cultures combining in India. What is the reason? That is the question. Okay. Page 101 again. Last paragraph, first line. India has contacts. I repeat. 1.4, page 101, last paragraph. India has contacts with many countries since many centuries. Goods and ideas are being exchanged since ancient times. Similarly, concepts of Upanishad, stories of Ramayana and Panchatantra, therapeutic methods, Indian numerical figures and decimal system, etc. could reach many parts of the world. India is an important location in South Asia, up to South Asia. Let's say 1.4 complete.
Any doubts? Okay. 1.5. State how many and which are the tectonic plates. कितने हैं और कौन कौन से हैं. Page 103. See the title geological structure. Second paragraph, 8th line. There are 7. 1.5, page 103. Title geological structure. Second paragraph, 8th line. Did you get it, all of you? There are 7 major tectonic plates. These are number 1 Pacific plate, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antarctic plate, वहां तक. Number 7 Antarctic plate. Any doubts? Okay, now comes your 2.1. You have to define the terms, definition. Number 1 is standard time. Page 99. See the second last line of your page. The standard meridian. 2.1, page 99. नीचे से second line. Did you all find it? Okay, start from there. The standard meridian of India is 82.30 degree east longitude. It passes through 5 states. Its local time is accepted as standard time of India. Up to standard time of India. Okay, so 2.1 complete. Any doubts? Okay, number 2, Tropic of Cancer, page 99. The paragraph below the picture and the third line, the Tropic of Cancer. 2.2, page 99. The paragraph below the picture, third line. The Tropic of Cancer, which is located at 23.5 degree north latitude and divides the country into 2 parts, passes through the center of India. Up to center of India. That's a 2.2 complete. Middle of India is one and the same. Any doubts? Okay, I cannot see Vansh and Dash. Number 3 is peninsula. Now peninsula directly meaning is not given, I am dictating. अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी एम्प्टी स्पेस देखो पेज 105 में नीचे जगह है वहां पर आप लिख सकते हो. दिस इज योर 2.3 पेनिनसुला. रेडी टू राइट? ओके, राइट डाउन. कहीं पर भी लिख लो. दिस इज योर 2.3. यू आर नॉट मार्किंग, आई एम डिक्टेटिंग. A land area, a land area surrounded by water bodies. Check the spelling. Surrounded by water bodies on 3 sides. On 3 sides is called a peninsula. Is called a peninsula. Full stop, complete. Any doubts? Okay, number 4. What is definition number 4? Divergent. Okay. मेरी बुक में कॉन्वर्जेंट लिखा है. Okay, divergent, page 103.
Can you see your 1.5 getting completed? उसके नीचे की लाइन these plates मिला मिला वो these plates का कर दो the plates these के बदले the डन ओके सो 2.4 पेज 103 जहां पर 1.5 खत्म होता है उसके नीचे की लाइन द प्लेट्स अभी द का टी कर दो कैपिटल ठीक है द प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर विच आर नोन एज डाइवर्जेंट प्लेट्स up to divergent plates that's a 2.4 complete got it all of you Krisha okay now number 5 and 6 both I am going to dictate so find out a place and write down hemisphere ready to write okay write down the equator divides the earth into two equal parts into two equal parts full stop each such part to the north and south to the north and south of the equator is called hemisphere is called hemisphere full stop complete देखो मैं आपको डायग्राम में इजीली दिखा देती हूँ वैसे आपको पता ही है दिस इज अवर अर्थ एंड दिस इज द इक्वेटर राइट तो दिस पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर सिमिलरली दिस इज द प्राइम मेरिडियन तो प्राइम मेरिडियन के आजू बाजू भी दिस इज नोन एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज नोन एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर सो डू यू अंडरस्टैंड हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं एनी डाउट्स ओके ओके नाउ व्हाट इज योर नंबर 6 सर्कुलेशन को कट करके लिखो कॉन्वर्जेंट सर्कुलेशन जैसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है वहां पर लिखो कॉन्वर्जेंट रिटर्न गो टू पेज 103 ये होगा आपका 2.6 okay now for that can you see your 2.4 getting completed उसके नीचे की लाइन at some places got it all of you दर्शन 2.6 पेज 103 2.4 के नीचे की लाइन एट सम प्लेसेस दीज प्लेट्स अभी दीज क्या कर देंगे द दीज क्या करेंगे द
I'm again repeating that some places the plates come closer to each other, which are known as convergent plates. Up to convergent plates. That's your 2.6 complete. Got it, all of you? Okay, now let's go to 3.1. Give the information about location and area of India. So there are two questions. You have to give the information of location of India and area of India. अब लोकेशन और एरिया में डिफरेंस क्या है वो मैं बताती हूँ. आंसर तो मार्क नहीं हो पाएगा लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. सपोज दिस इज द ग्लोब. ठीक है, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में दिस इज एशिया. नहीं, थोड़ा गलत हो गया. दिस इज एशिया और एशिया में यहां पर है इंडिया. ओके, तो इसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया कि इंडिया कहां पर है. अर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया एशिया में साउथ ऑफ एशिया इज इंडिया. तो इसको बोलते हैं लोकेशन. समझ में आ गया ऑल ऑफ यू. अब एरिया किसको बोलते हैं कि सपोज ये हमारा इंडिया है तो दिस इज द विड्थ, दिस इज द लेंथ और इसका जो एरिया है 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर. याद आ रहा है कुछ. इसको बोलते हैं एरिया. ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन में लोकेशन ऑफ इंडिया बताना है और एरिया ऑफ इंडिया बताना है. इज द क्वेश्चन वेरी क्लियर टू यू. ओके, आंसर आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अभी के लिए अगर आपको कोई क्वेरीज, इफ यू हैव टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क. एनी डाउट्स?